Hello everyone and welcome back to yet another Exchange One live. कैसे हैं आप लोग? Hope you are having a good trading session, guys. So before I get started, क्या आप मुझे सबसे पहले एक लाइक दीजिए और मुझे बता दीजिए कि मेरी कमेंट्स मेरी जो ऑडियो और वीडियो है वो ऑडिबल है कि नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में. So then I can proceed with the video. Just let me know in the comments below. ठीक है guys, एक बार कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे. I think things look good from my end, so let's get started with the live. And as expected, guys, as we have discussed over and over and over again in every live stream, Bitcoin is falling, and it is expected to continue to fall. There is no trend change. कोई ज़रूरत नहीं है अभी बिटकॉइन लॉन्ग करने की भी, कोई घाई नहीं है. आराम से प्राइस एक्शन को प्ले आउट करने दीजिए. Right, so let's get started with some interesting things and observations about Bitcoin. Last time हमें एक वीकली क्लोज बिटकॉइन पे $60,000 के नीचे जब देखने मिली थी, वो थी अगस्त 2024 में. ठीक है, उस it has been over almost I would say 700 days since we got a weekly close below 60k. 672 days के बाद बिटकॉइन has closed below 60,000. तो नॉट ओनली दैट, ये 60,000 का लेवल जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है, टेस्ट हो रहा है. यहाँ विक्स हमने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर ली है, तो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो ऑब्जर्व हो चुके हैं. मोर ओवर यहाँ आने के बाद 60,000 के नीचे क्लोज होने के बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है कम्प्लीटली साइडवेज हो गई. राइट, यहाँ प्राइस कम्प्लीटली साइडवेज हो चुकी है. दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज नॉट अ गुड साइन. अगर हमें ये सपोर्ट होल्ड करना होता है यहाँ पे, ये वाला जो कि ऑलरेडी काफी वीक सपोर्ट है, देन हमें यहाँ से सीधा एक वी शेप रिकवरी देखने मिल सकता था. लेकिन ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के वर्ज पे है. आज या कल तक ये ब्रेकडाउन हाईली 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 लाइकली है. ठीक है, तो this is the bias for Bitcoin. We have a weekly close after 700 days on Bitcoin under 60,000 for the first time in 700 days, and वहाँ पे आके हमारे पास है solid sideways movement, solid sideways movement, right guys? So yeah, just a second. Sorry for that guys. तो yes, यहाँ पे बिटकॉइन आ चुका है $60,000 के नीचे एंड हो चुका है कम्प्लीटली साइडवेज, विच मीन्स इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकडाउन. ठीक है, अब ब्रेकडाउन आएगा तो व्हाट आर द लेवल्स दैट वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग एट, सॉरी ये तो बहुत दूर हो गया. इमीडिएट लेवल वी आर लुकिंग एट इज अराउंड 52,000, 52,500 एंड फिर उसके नीचे आ जाता है 49,000 या 48,000 का जोन. तो इस जोन तक हम बिटकॉइन को नीचे आते हुए देख सकते हैं. मोर ओवर हमें और क्या दिख रहा है? हमें और दिख रहा है
कि यहाँ पर क्या बन रहा है गाइस। बना है हेड एंड शोल्डर, उसका भी ब्रेकडाउन ऑन द वे है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन इज स्ट्रांगली बेरिश, स्ट्रांगली बेरिश। फाइन गाइस, ओके, यस। तो अगेन इफ आई हैव टू समराइज माय एनालिसिस फॉर बिटकॉइन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वीकली क्लोज बिलो 60K for the first time in 670 days. Number 2, head and shoulder pattern on daily breakdown. Number 3, complete sideways consolidation for 5 days after breakdown. And number 4, जो है relatively equal lows on the daily time. ठीक है, BTC poised to break 58.8K support, can continue going down towards 55K, then 52K, then 49K. ठीक है, तो करंट प्राइस जो है ये है हमारी एनालिसिस बिटकॉइन की। ऐसे ही हमने लास्ट टाइम किया था $80,000 पे, $83,000 पे। वहां पे हमने बताया था आपको कि $60,000 के नीचे प्राइस जाएगी। Of course, here we are, and now the prediction is it can even go all the way till 52 or 49,000 in the coming few weeks. Invalidation, weekly close above 64. ठीक है guys, तो ये है हमारी बिटकॉइन की एनालिसिस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लेट मी शो यू द रिलेटिवली इक्वल लॉस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप देख सकते हो ये सारी लिक्विडिटी है, सारे के सारे स्टॉप लॉसेस इन लॉस के नीचे रखे रहेंगे। यहाँ 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 ये सारे जो विक्स है उसके नीचे, दीज विक्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रखे होंगे। तो हो सकता है प्राइस नीचे आके एक बार फिर लिक्विडिटी हंट कर दे। अगर लिक्विडिटी हंट करनी है और रिवर्सल करना है तो प्राइस हैज टू गो डाउन एंड एग्रेसिवली कम अप। लेकिन अगर प्राइस नीचे लिक्विडिटी हंट करने के बाद यहीं पर नीचे टाइम पास करता है तो उसका मतलब ये है नेक्स्ट लेग डाउन इज आल्सो ड्यू। ऑलराइट गाइस, so this is the analysis for Bitcoin. Okay guys, simple है, nothing complicated at all. अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बता देता हूँ, राइट। अगर मैं आ जाऊँ कैलेंडर पे हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री के, तो हम देख सकते हैं कि आज 6:30 को न्यूज है एंड कल 6 o'clock को न्यूज है। कल की न्यूज जो है वो कंपैरेटिवली इज मच बिगर देन टुडे 6:30 PM न्यूज। तो आज और कल न्यूज डे है, तो जो ब्रेकडाउन आ सकता है वो आज या कल में ही आ सकता है मोस्ट लाइकली। एंड टुडे इज आल्सो द वीक मंथली क्लोज, तो नेक्स्ट 48 आवर्स आर गोइंग टू बी इंसेनली वॉलेटाइल। बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने मिलने वाली है नेक्स्ट, आई वुड से नेक्स्ट 30 आवर्स, नेक्स्ट 30 to 40 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल फॉर क्रिप्टो। तो प्लीज मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन में कि ये सारे लोज अगर तोड़े बिना या नहीं तोड़े अगर हमने, तो यहाँ पर रिलेटिवली इक्वल हाइज भी है, राइट। यू कैन सी दिस हाई, दिस हाई, दिस हाई। तो प्राइस
ये लोस तोड़ के, ये हाईस तोड़ के फिर वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करें, ये भी पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाई माय इनवैलिडेशन इज अबाउट 64,000 सेफ जोन है, क्योंकि ये सारे रिलेटिवली इक्वल हाईस जो है वो प्राइस निकाल सकती है। ये लोज निकल गए ऑलरेडी, राइट? तो आई थिंक these now that these lows are taken out, if these highs have to be taken out, तो प्राइस को यही से रिवर्स करना चाहिए। अगर ये लोज भी अगर प्राइस ने निकाल दिए नीचे की तरफ, तो मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ कंटिन्यू होगा। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है और फिर नीचे आना हो, तो देन नाउ इज द टाइम टू डू दैट इन द नेक्स्ट 1.5 आवर। बट अगर हम नेक्स्ट 1.5 आवर 2 आवर्स नीचे की तरफ ट्रेड करके ये लोज भी जो है तोड़ देते हैं, तो चांसेस आर कि ये नहीं होगा, इनफैक्ट ठीक है। So yeah, that is the analysis for Bitcoin, guys. Hope you'll find it useful. Um, Next is I would go on Ethereum, ठीक है, और probably गोल्ड पे ही आ जाते हैं एक बार, ठीक है। 16 मिनट्स में गोल्ड की कैंडल जो है वो क्लोज हो रही है। यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं हम शायद, समथिंग इफ दिस कैंडल इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स क्लोजेस बेरिश, तो ये ट्रेड हम एक्टिवेट कर सकते हैं गोल्ड में, ठीक है। We can do something like this on gold, एक 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, प्रोवाइडेड ये कैंडल जो है वो बेरिश क्लोज। अब इसकी रैशनल क्या है कि वी हैव अ बेरिश आरएसआई डाइवर्जेंस, वी हैव अ डबल टॉप, and we have a bearish engulfing candle, and our primary trend is obviously bearish, ठीक है। And our liquidity objective is also bearish because we want price to ultimately reach for this 4 hour support over here। तो तो 4 आवर के हिसाब से हमें चाहिए कि प्राइस थोड़ा सा और नीचे आए। 4 आवर की ट्रेंड बेरिश है, 1 आवर की ट्रेंड भी बेरिश है, 1 आवर पे बेरिश आरएसआई डाइवर्जेंस बनी है और डबल टॉप भी बनी है विद बेरिश आरएसआई डाइवर्जेंस, और एक कॉन्फर्मेशन कैंडल भी हमें मिल चुकी है। तो फिर उसके बाद इसके क्लोजिंग के बाद हम ये ट्रेड ले सकते हैं ऑन गोल्ड। ऑलराइट गाइस, यस, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर गोल्ड। गोल्ड में हमारी फर्स्ट ये एनालिसिस ये थी कल कि ये जो लोज है वो स्वीप होने चाहिए, एंड देयर यू गो, ये लोज जो है वो स्वीप हो चुके हैं। ओके, दैट टारगेट इज नाउ कंप्लीट, बट अगेन व्हाट आर वी फॉर्मिंग? शोल्डर, हेड, शोल्डर, पोटेंशियल ब्रेकडाउन एंड कंटिन्यूएशन, ये भी बन रहा है गोल्ड में, ठीक है गाइस। Just give me a moment, guys. ठीक है guys, so I was personally taking this trade on gold, a little premature because हमें कैंडल क्लोज नहीं मिली है, but that's okay। 10 मिनट्स लेफ्ट है, अगर 10 मिनट्स में अग्रेसिवली रिवर्स हो जाता है तो आई विल बी आउट ऑफ द ट्रेड, राइट? तो ये एग्जैक्ट ट्रेड आई हैव टेकन माई सेल्फ एज वेल ऑन माई पर्सनल अकाउंट फॉर गोल्ड, आई वाज जस्ट पंचिंग इन दैट ऑर्डर, ठीक है। सो या, देयर यू गो गाइस।
ये देख सकते हैं आप कैसे बिटकॉइन गिर रहा है, फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, एब्सोल्युटली फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ गाइस। अमेजिंग अमेजिंग ब्रेकडाउन, अमेजिंग ब्रेकडाउन, क्रेजी प्राइस एक्शन। इथीरियम में भी हमारा टारगेट तो यही रहेगा, ये रिलेटिवली इक्वल जो है वो हम स्वीप कर देंगे और इसके नीचे, तो वी शुड सी इथेरियम बिलो $1500 सून। दिस ऑल्सो, तो 1506 का टारगेट लेके चल सकते हो इथेरियम पे, मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे आके इन दोनों को तोड़ना चाहिए इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है गाइस, एनी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एनालिसिस की? Interestingly, silver is holding up well. I have no idea why. Absolutely no idea why, but silver is holding up pretty well as compared to others. But यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, डबल टॉप विद RSI डाइवर्जेंस, तो एम पैटर्न बन रहा है, तो नीचे की तरफ हम गिर सकते हैं। राइट, अमेजिंग फॉल गाइस, लुक एट दिस, लाइव पे हमने बताया कि बिटकॉइन गिर सकता है, एंड हियर वी आर। राइट, so one thing to realize is guys, what I think, I believe most people know is only that they only look at price, ठीक है? So there are two axes while trading, right? एक हो गया तुम्हारा y axis ये वाला, और एक हो गया तुम्हारा x axis, right? तो ये y axis जो है वो टाइम प्राइस है, right? So let me just write price हो गया, so everyone sees price, ठीक है, but no one sees time। ये टाइम जो है ये कोई नहीं देखता। the market moves at particular times and those are coordinated moves by the big players, ठीक है? So nothing is a coincidence over here। तो ये जो टाइम फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बड़े मूव्स जो आते हैं वो आते हैं न्यूयॉर्क ओपन पे, विच इज अराउंड 6 PM to 7 PM आवर टाइम, और व्हेन कोई इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट होती है, न्यूज इवेंट जैसे मैक्रो न्यूज इवेंट्स आती है जो आप फॉरेक्स फैक्ट्री में ये कर सकते हो, क्या फॉरेक्स फैक्ट्री में आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे आज 7:30 और 6:30 को बहुत इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ न्यूज़ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 5 o'clock से लेके 8:30 का टाइम जो है वो सबसे वॉलेटाइल टाइम रहेगा हमारे क्रिप्टो मार्केट के लिए, एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द डे। सिमिलरली टुमारो 6 PM के आसपास बहुत वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, तो सबसे ज्यादा मूव्स उसी टाइम के आसपास आ सकते हैं। So most of us, we only see one axis, we do not see the second axis, and that is why we struggle. But the market moves intentionally at particular times, and measuring the time is also very important. Just for example, I had discussed on the other lives that right, ये मैं निकाल देता हूँ। जैसे ही हमने ये रेंज देखी फॉर्म होते हुए, राइट, वी सॉ दिस रेंज फॉर्म ओवर द पास्ट 2-3 days। I kind of predicted by looking at the news कि ये जो consolidation है, it's happening for a reason, right? Because the market is anticipating some news और उसके लिए रुका है market। तो सबसे volatile event कब है? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा जो है वो है थर्सडे के लिए। तो थर्सडे के मूव के लिए मार्केट 2-3 दिन सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे इस रेंज में, मे बी थोड़े फेक आउट्स देगा, मे बी थोड़े ब्रेकआउट्स करके लॉन्ग्स को ट्रैप करेगा, बट द मेन मूव इज पॉइज्ड फॉर वेडनेसडे एंड थर्सडे, एंड दिस इज जस्ट द सेटअप डे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ कितनी टाइट रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, राइट? कम वेडनेसडे और थर्सडे, कम अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, हम पूरी वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक्सपेंड होते हुए देखेंगे। You will see major moves. You won't see today and tomorrow also like this. Today and tomorrow will either be like this, or it will either be like this, or it will be something like बहुत volatility हमें देखने मिलेगी। That is because we are also taking into consideration the y-axis, which is time, the x-axis, which is time. Y-axis is only price, ठीक है? तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मार्केट मूव्स एट पर्टिकुलर टाइम्स इंटेंशनली, एंड दैट टाइम इज यूजुअली न्यूयॉर्क ओपन, लंदन ओपन,
and news events which are usually scheduled between 6 p.m. to 7 p.m. Uh, on India time for the US macro based news events. Right. So yes, guys, this is something also which can be an important learning. You can note it down, you can tattoo it on your head as well. गोल्ड देखते हैं क्या कर रहा है. गोल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स दे रहा है. 1 second guys. Right, sorry guys. So as I was saying, गोल्ड यहाँ थोड़ी सी परेशानी दे रहा है हमें. 1 आवर पे तो बेरिश है, लेकिन 5 मिनट पे बुलिश हो गए. So I don't know what to do because 5 मिनट पे अगर मैं जाऊँ. Oh no, sorry, not in 5 minutes. Maybe I was seeing some other chart. नहीं नहीं, सॉरी, गोल्ड बेरिश ही है. मैं शायद से कोई दूसरा चार्ट देख रहा था. Yeah, sorry, this is safe guys, safe. My bad. Okay, 5 minutes left for candle close on gold and ये breakdown highly likely लग रहा है at this point in time मुझे. ये ट्रेड आप ओपन कर सकते हो गाइस. बीएनबी गाइस, बीएनबी हमने टेलीग्राम पे शेयर किया था. मजा आ रहा है या नहीं आपको? $567 पे हमने शॉर्ट बोला था आपको. $567 पे ऑलरेडी आप हो अराउंड 3.5% प्रॉफिट में. टेलीग्राम पे भी ये ट्रेड दिया था एंड लाइव स्ट्रीम में भी ये ट्रेड दिया था. तो मेक श्योर कीजिए आप हमारे लाइव रेगुलरली अटेंड कीजिए और टेलीग्राम के ट्रेड से भी आप अप टू डेट रहिए. हमारा टारगेट क्या था? हमने कहा था ये, अगर अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप ये रिलेटिवली इक्वल लोस के ब्रेक कर होने का वेट कर सकते हो. ऑल द वे डाउन यू आर ऑलरेडी इन 3.5% प्रॉफिट गाइस. एंड टारगेट तो आपका 12% तक का है, ऑलमोस्ट 11 से 12% तक का. कीप बुकिंग प्रॉफिट्स वेन एवर यू फील लाइक गाइस. कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु टुक दिस ट्रेड ऑन बीएनबी. स्विंग ट्रेड था, हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, 2-3 दिन पहले, और टेलीग्राम पे भी ये सेम ट्रेड सेटअप स्क्रीनशॉट करके आपको भेजा था. तो लाइक कर दीजिएगा इस स्ट्रीम अगर आप लोगों को ऐसे ट्रेड सिग्नल्स पसंद हो तो. एंड मेक श्योर कीजिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़े रहे. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो गाइस. राइट, अग्रेसिव मूव आने वाला है बिटकॉइन में. बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड. लॉन्ग नहीं करना है, बी प्रिपेयर्ड. लेवरेज लॉन्ग्स रिस्की है. 3x to 4x लेवरेज भी रिस्की हो सकता है ऐसे मार्केट्स में. Look at this guys, look at this. Complete sideways action for 1, 2, 3, 4, 5, 6 days after breaking 60,000. Aggressive move towards the downside is most likely pending. 75% चांस की प्राइस नीचे की तरफ निकल जाएगी इन द कमिंग 2-3 days. ठीक है, स्टे पोजिशनड अकॉर्डिंगली.
गोल्ड का हमारा ट्रेड हमने जो लिया था वो हम आपको बता देते हैं, लाइव स्ट्रीम पे ही ये ट्रेड दिया था और दिया था, गोइंग वेल ऑलरेडी। ओके गाइस, सुपर। लाइक कर दीजिए स्ट्रीम गाइस अगर ये गोल्ड का ट्रेड भी आपने लिया हो तो। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। देखा, ब्रेक डाउन हो रहा है जस्ट एज वी एक्सपेक्टेड इट टू। 3 लोग देख रहे हैं लेकिन 2 ही लाइक्स है, ये कौन है तीसरा दगाबाज जो लाइक नहीं कर रहा है? रिवील योर आइडेंटिटी माफिया। लाइक कर दीजिए स्ट्रीम गाइस, लाइक कर दीजिए। व्हाट अ ब्रेकडाउन, व्हाट अ ब्रेकडाउन गाइस, सुपर। ऑलराइट गाइस, तो हमने आपको ट्रेड आइडिया दे दिया है गोल्ड का। बीएनबी का ट्रेड भी आपको जो दिया था वो प्रॉफिट में चल रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम का भी हमने डिस्कशन कर दिया है। So I think we are done for the day, guys. I will see you all tomorrow on another live stream at 3:30 p.m. कल 6 p.m. बहुत important है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है। आज 6:30 p.m. और 7:30 p.m. बहुत important है because न्यूज इवेंट्स आने वाले हैं। So let's see guys, let's see। 6:30 वॉल स्पीक्स, तो यहाँ पर क्या होने वाला है देखते हैं। अभी केविन वॉश स्पीक कर रहे हैं तो ये एक इमीडिएट न्यूज इवेंट नहीं है, बिकॉज कितना बात करेंगे स्पीच में, क्या बोलेंगे, उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द स्पीच आता रहेगा एज कम्पेयर टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 2 सेकंड में आ जाता है एंड मार्केट उसे ऑब्जर्व कर देती है। राइट गाइस, ठीक है गाइस, सो आई विल सी ऑल अगेन टुमारो at 6:30 p.m. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ट्रेड सेफ, बाय बाय।